रजत, चाय पीने का मन कर रहा है। मैं तो पी रहा हूँ। मेरी का है। 1 मिनट लेकर आया। जल्दी ला यार। हो गया। उप्स। ओ तेरी, गिरा दी जैसे पाकिस्तान ने अपने सेमीफाइनल के होप्स गिरा दिए हैं। इस बार तो तो नहीं हो पाएगा जनाब, अगली बार। पाकिस्तान बाहर हो गया है इस T20 वर्ल्ड कप से, एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्ट। with Pakistan. So, but this is the expected with Pakistan. Whenever there are high expectations and high stakes performances needed from them, they always under deliver or deliver up to standard or That's right. ability. Yeah. So yeah, Pakistan has lost. Pakistan has not lost to They Sri won the Lanka. They won. match, but they've They lost won the the match, spot. but they have not beaten them by a margin that they needed to qualify for the semifinals. That's right, yeah. 65 रन का मार्जिन था that they had to win by 148. It was gettable at few point of time, but फिर भी नहीं हो पाया। यार 148 में रिस्ट्रिक्ट करना था, वो कर सकते थे वैसे। हम्म। पर द वे दे बोल्ड एट वन पॉइंट लग रहा था 103 फॉर 5 हो सकता है। आई थिंक 50 was needed of the last 8 overs या। and 5 wickets remaining. You would think that any other team टीम अंडर would put प्रेशर। the opposition under pressure, but वो नहीं हुआ। और एंड मतलब इसके एक तो चेस नहीं हो पाया, वो रोक भी नहीं पाए, और बैटिंग ओपनर्स ने अच्छी की। एक टाइम पे लगा था 230 240 बन जाएंगे आराम से, पर वो भी नहीं हो पाया। बनने चाहिए थे। द वे दे वर गोइंग 176 in 16 overs for the loss of just 1 wicket, या। and then they just collapsed after that. एंड या यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, मतलब टीम्स अगर आप फेजेस में ब्रेक करो ना T20 की इनिंग्स को, तो टीम्स पावर प्ले में दे अटैक, द मिडिल फेज कंसोलिडेट वाला होता है, और लास्ट के 4 5 ओवर्स होते हैं दे अगेन गो अल्ट्रा एग्रेसिव। बट अल्ट्रा एग्रेसिव यहाँ हो नहीं पाया क्योंकि विकेट्स क्या, इट्स बिन अ मैसिव कोलैप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ज्यादा विकेट्स गिरे हैं। 176 for 2 से लेके 210 for 8. यप। That was the collapse in the last 4 overs. And the way they had the number of wickets they had in hand, they easily should have got about 220 to 230. इजीली या। और अगर 230 बनते, I think they could have restricted. They at least could have added more pressure to Sri Lanka and bundled them out for 165. From 103 for 5, 165 would have seemed a lot. राइट। So, although I think श्रीलंका ऐसे माइंडसेट के साथ खेल रहा था जैसे कि they are not playing for just the 148 target. They don't care about the scenario for Pakistan. राइट। They are playing to win the game, and that's what they did towards the end with Dasun Shanaka and that innings of almost got them over the line. राइट। Um, it was some innings from the captain leading from the front. I think last over में 28 चाहिए थे। 28, हाँ 28 चाहिए थे, एंड देन शनाक का हिट्स अ बाउंड्री एंड देन हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, तो इक्वेशन कम्स टू 6 नीडेड ऑफ 2। राइट। पर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान ने बैटिंग तो अच्छी की है। इट्स जस्ट कि बॉलिंग ने उनको नहीं संभाल पाए। और एक मतलब एक चीज और भी, बैटिंग में दे लॉस्ट व्हाट 6 विकेट्स लास्ट 2 ओवर में, क्या कोलैप्स है, मतलब हाँ, अनबिलीवेबल। वो कोलैप्स मुझे समझ नहीं आया क्या सोच क्या रहे थे। नोबडी परफॉर्म्ड अदर देन, even though a big contributor of these collapses, Mr. Babar Azam, was not in the squad or not in the playing 11. तो ये फिर भी एक मस्ट विन गेम था। मस्ट विन गेम में बाबर आजम को ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गजब चल रहा है, मतलब मजाक बना रखा है। बट साहिबजादा फरहान ने सही खेला। आई थिंक 100 of 60 हाँ, balls. and he's the highest run getter I think इस T20 वर्ल्ड कप में 383 कुछ रन्स बना लिए हैं, तो इट्स अनयूजुअल, क्योंकि अगर बैट्समैन यूजुअली हाईएस्ट रन्स बनाता है तो वो टीम एटलीस्ट सेमीज तक जाती है, फाइनल्स तक जाती है, मोस्ट विकेट्स या मोस्ट रन्स, एक रिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन वाली बात है। पर इस केस में ऐसा होता नहीं है। बैक टू बैक हंड्रेड्स आर टू, मतलब या। एक के बाद एक, एंड इन की मैचेस। बट हाँ, आई थिंक वही प्रॉब्लम है ना कि अगर बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती। तो अब जब एंड दोनों चलती है तो फिर फील्डिंग नहीं चलती। और फिर अगर सब चल रहा है तो कुदरत का निजाम नहीं आता। ये भी बात सही तो है। यही प्रॉब्लम है बस पाकिस्तान की कि
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड में, and then they end up not qualifying for the top among the top teams and that at the big stage. Right. So so that was the Pakistan Sri Lanka game. Now coming to the India versus West Indies game, which is going to Yep. be the mother of all clashes at the Eden Gardens. Right. Uh, what do you think? I think India will have to go with the same squad, right? Or the same 11. So, if you look at the thing that, okay, matlab, wickets wise, West Indies has lost a lot of wickets to wrist spin. Hmm. So there's that weakness of the West Indian batting against wrist spinners. But क्या हो जाता है कि you can have a wrist spinner in your team, an extra wrist spinner. Varun Chakravarti is there, but you can have one more. But फिर एक चीज होती है कि do you play your playing 11 as per the matchups of the other teams, or do you play as per the conditions in the pitch? क्योंकि dry wicket रहेगा. We know कि Eden Gardens में usually pace or bounce support रहता है, not that much of turn. It's a good batting wicket. It's a batting paradise. Yeah, so I think in you cannot drop, like logically cannot drop anyone from this squad considering the performances in the last few games, Yeah. except the South Africa game. Almost everybody has put their hand up. Yeah, Yes, the everyone's openers performed, so haven't. it gets even more tougher now. Yeah, openers haven't performed. That's for sure. Yep. And they've had to switch it up from match to match. But you can't drop an Akshar Patel. You made that mistake in the South Africa game. That's right. You maybe can drop one person, and that also I'm a little on the fence about, which is Arshdeep Singh. Yep. और यार अर्शदीप सिंह को भी ड्रॉप करोगे और ईडन गार्डन्स में you get little bit of swing under lights Right. and you have little grass on this pitch. Yep. So a pure seaming bowler and a swinging bowler you can't really drop. So I understand the intent that Kuldeep Yadav should play, Hmm. but if Yadav has that one bad day, or if Kuldeep Yadav doesn't live up to his Right. billing, then it'll be a case of too many changes or too many cooks spoiling the broth. That's right. Yeah. So यही है कि I don't know if you can change the squad. I think India should go with the same squad. Um, and yeah, if Kuldeep Yadav has to play, I feel it should be in the place of Arshdeep Singh. Right. Also, there's a saying, right, that you don't fix things if it's not broken. So Right. प्लेइंग 11 जो पिछले वाली थी, दे वन द मैच, बहुत अच्छी तरह से मैच जीते हैं, तो यू डोंट वांट टू ट्राई एंड फिक्स देम, लाइक क्योंकि कुछ ब्रोकन है ही नहीं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट स्क्वाड. Yeah. And from the West Indies point of view, I think West Indies will make that one change where Akil Hussain plays Comes instead back. of Roston Chase. Yeah, because last time that was one change which they had made against South Africa, कि Chase को they brought him in because of Yeah. batting depth, क्योंकि West Indies bats really deeply. Yeah, And but they bat. West Indies already bats up to number 9. Romario right, Shepherd comes at number 9. So, which is unbelievable. which is crazy batting depth. I mean, most Yeah. teams don't have it. India does. Even India Yep. bats till number 8. Yep. Uh, but And yeah. Sorry, I would just like to add one more thing. Batting depth, how it happens is previous game like South Africa वाला मैच मैं देख रहा था. तो क्या हुआ, they hmm, were 75 or something for 7 and you're like अच्छा ये तो 100 या 120 में पूरी टीम बंडल्ड आउट होने वाली है, इजी विन फॉर साउथ अफ्रीका. बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि पावर yep. हिटर्स और प्रॉपर बैट्समैन, नंबर 8 हाईएस्ट 8 विकेट पार्टनरशिप भी हुई है एंड प्रॉपर बैट्समैन है. सो दैट्स द थिंग, यू गॉट टू कीप, मतलब ऑल आउट ही करना पड़ेगा इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट दैम. Last game में I know Romario Shepherd and Jason Holder. Yep. वो दोनों ने बचाया था down the order, and I Right. think yeah, batting में तो of course they have the depth. Bowling is, of course, I feel India is much better. Yep. बट इंडिया ऑल्सो हैज टू डिलीवर. इंडिया का भी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम रहा है कि जब बैटिंग चली है तो बॉलिंग नहीं चली, Right. और जब बॉलिंग चली है तो बैटिंग द ओपनर्स हैवंट परफॉर्म्ड और द Yep. मिडिल ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड. Yep. So it'll be interesting to watch how India approaches this game. I Yep. think the template has been set from the previous game against Zimbabwe, Right. and India will like Yep. Abhishek Sharma to
stay in form Yep. after hopefully finding his form again. Right. So, So yeah, so yeah, this is like Sanju the Samson. fourth spot for up for grabs now. Because अभी तक जो भी मैचेस हुए हैं सुपर एट्स में, इट्स लाइक ऐसा कोई मैच नहीं हुआ है जिसमें बोथ द टीम्स हैव टू विन टू गेट दैट सेमीफाइनल स्पॉट, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दे वन ऑल द गेम्स और दे कंफर्टेबली क्वालिफाइड. New Zealand qualified because Pakistan couldn't beat by a certain margin. But yeah, is like a virtual quarterfinal for both the teams. So this, I feel this becomes the most exciting game of the Super 8s. अभी तक जो भी देखा है. Right. And yeah, I think it'll be an exciting clash. Both teams vying for that semi-final spot. Yeah, and both teams are equally good. Bowling, में obviously India sort of is a bit on the heavier side, but huh. So it'll Right. be a good match to see. Awesome. So Yeah. yeah, that wraps up the build-up for the India-West Indies game. And stay tuned. Please like this video if you enjoyed it. Share with your friends and family, and drop a comment. Tell us how you think India will fare in this game. Yeah. What should be the playing 11? Yeah. If any changes, who do you think comes in for which player? Yep. But yeah, What are keep the playing, supporting. and also what are India's chances of reaching the semi-final? Like, what do you think? Like, what's gonna happen? So please share your thoughts, because yeah, we would look forward to hearing them. Yeah. Awesome. Stay tuned, and we'll bring you all the updates Yeah. as this World Cup progresses. Yeah. All right. Thank Bye. you. Thank you for watching. See you all.